Hello everyone. Today we are going to see the Kirchhoff's voltage law. Usually we call as a KVL. Okay. The KVL says that sum of voltages in a closed loop is equal to 0. Okay. Summation of voltages in a closed loop is equal to 0. This is a sign of summation. So summation of voltages around the closed loop is equal to 0. So this is a mathematical statement of KVL. Okay. So while applying KVL, if there is any voltage source, okay, so voltage source represented by circle with polarity. Okay. Now if you are traveling from A to B, while applying KVL, if you are traveling from A to B, that is we are traveling from positive terminal to negative terminal, then this magnitude of voltage source will be considered as negative. Okay. So when we are traveling from positive is we call as higher potential, negative is we call as a low potential. So when we are traveling over this voltage source from positive to negative, it is we call as a potential drop, and this potential drop will be considered as negative. Okay, in KVL analysis. Similarly, if you are traveling from A to B, okay, this is, let us say that A and B, okay, and when you are traveling from negative terminal to positive terminal over this voltage source, okay, कि ये voltage source through हम लोग जा रहे हैं negative to positive terminal, then it is we call the rise in potential, and this potential rise will be considered as positive in KVL analysis. Okay, so when we are traveling from negative to positive, it is considered as positive in KVL analysis. Similarly, this is a resistor. When current flows to the resistor, voltage will be developed across the resistor according to Ohm's law, and this voltage has a value V is equal to I into R. Okay, according to Ohm's law. So इसमें जब करंट फ्लो रहा है तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज डेवलप हो रहा है. ओके, एंड जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है उसका पोलैरिटी कैसे असाइन करेंगे हम लोग? तो पोलैरिटी विल असाइन अकॉर्डिंग टू द करंट डायरेक्शन. ओके, जहां पे करंट एंटर हो रहा है रेजिस्टर में वहां पे प्लस देंगे, जहां पे करंट बाहर निकल रहा है रेजिस्टर से वहां पे माइनस देंगे हम लोग, बिकॉज करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. सो करंट ये डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब दिस ए पॉइंट मस्ट बी हाइयर पोटेंशियल देन बी. हाइयर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव देन बी, बी मतलब लो पोटेंशियल मतलब नेगेटिव, लाइक दिस. ओके, सो जब करंट ऐसा फ्लो रहा है तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. करंट जब ये डायरेक्शन में फ्लो होगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, लाइक दिस. ओके, सो अभी ये जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है रेजिस्टर के अक्रॉस में, उसको केवीएल एनालिसिस में हमें कंसिडर करना रहता है, इजंट इट? सो वो जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है रेजिस्टर के अक्रॉस में, वेदर वी हैव टू कंसिडर इट इज प्लस और माइनस. ओके, सो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम positive to negative mark terminal, this is a positive mark terminal, this is negative mark terminal. So traveling from positive to negative mark terminal must be considered as negative, and this is called potential drop. तो जब हम लोग ऐसा पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रैवल करेंगे तो उसको हम लोग, ये जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है इसके अक्रॉस में, उसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे, एंड हम लोग बोलेंगे माइनस आई इंटू आर, लाइक दिस. ओके, एंड दिस इज वी कॉल्ड द पोटेंशियल ड्रॉप. ओके, मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज है उसमें से इतना वोल्टेज कम हो जाएगा और बाकी का वोल्टेज इधर आएगा. ड्रॉप का मतलब ऐसा है. ओके, देन अगर हम लोग लेट अस से दैट करंट ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेकिन हमें ट्रैवल ऐसा करना है, ए टू बी ट्रैवल करना है. ओके, सो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम नेगेटिव मार्क टर्मिनल टू पॉजिटिव मार्क टर्मिनल, ओके, करंट पोलैरिटी किसके हिसाब से लगाया? करंट के डायरेक्शन के हिसाब से. करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, लेकिन हमें केवीएल ऐसा लगाना है. अभी वी हैव टू अप्लाई द केवीएल इन दिस डायरेक्शन, इजंट इट? सो वी हैव टू ट्रैवल फ्रॉम नेगेटिव मार्क टर्मिनल टू पॉजिटिव मार्क टर्मिनल. सो व्हेन वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम नेगेटिव मार्क टर्मिनल टू पॉजिटिव मार्क टर्मिनल, ओके, we have to consider this potential across the resistor as positive, and this is called as potential rise. सो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो हम लोग बोल रहे पोटेंशियल इसके अक्रॉस में राइज हो रहा है. ओके, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे तो हम लोग बोलते हैं इसके अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इजंट इट? लाइक दिस ऐसा. तो फिर यहाँ का जो वोल्टेज है उसमें ये वोल्टेज ऐड हो जाएगा और इधर वोल्टेज मिलेगा आप लोगों को. पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ए
plus this drop. Okay, और in this case potential at B is equal to potential at it minus this drop, ऐसा रहेगा. Okay, so that is the meaning of potential rise and potential drop. Okay, then next we are going to see the loop analysis. Okay, तो लूप एनालिसिस में हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं. लूप एनालिसिस और मेश एनालिसिस, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर. ओके, लूप और मेश एनालिसिस. नाउ फाइंड द करंट थ्रू 30 ohm resistor using mesh analysis. This is a network. You have to find out the current through 30 ohm resistor using mesh analysis. Now what is the procedure? Procedure is, first point is assign clockwise mesh current in each loop. So we have to assign the clockwise mesh current in each loop. तो पहले लूप में जो करंट है वो I1 अज्यूम किया हम लोगों ने. सेकेंड लूप में जो करंट है दैट इज I2 एंड थर्ड लूप में जो करंट है दैट इज I3. ओके, देन सेकेंड पॉइंट इज व्हाट इट इज, ऑब्जर्व वेदर द करंट सोर्सेज आर इन आउटसाइड ब्रांच. ओके, तो ये हम लोग बोलते हैं आउटसाइड ब्रांच है, ये भी आउटसाइड ब्रांच है, ये आउटसाइड ब्रांच है, ये आउटसाइड ब्रांच है, दिस इज ऑल्सो आउटसाइड, दिस इज ऑल्सो आउटसाइड, ये सारा आउटसाइड ब्रांचेस है. ओके, सो दीज आर वी कॉल्ड एज आउटसाइड ब्रांचेस. तो ये आउटसाइड ब्रांचेस में अगर कोई करंट सोर्स आ रहा है तो दैट विल डायरेक्टली गिव्स अस द वैल्यू ऑफ लूप करंट. ओके, दैट विल डायरेक्टली गिव्स द वैल्यू ऑफ लूप करंट, इजंट इट. ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन है. बट इसमें आउटसाइड ब्रांचेस में कोई करंट सोर्स नहीं है तो आपको डायरेक्टली लूप करंट का वैल्यू नहीं मिलेगा. ओके, थर्ड इज राइट डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लूप करंट. अभी डिपेंडेंट वेरिएबल कब मिलेगा, जब डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स सर्किट में रहेगा. ओके, तो यहाँ पे डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स नहीं है, डिपेंडेंट करंट सोर्स भी नहीं है, तो ये थर्ड पॉइंट नहीं रहेगा. डिपेंडेंट वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद डिपेंडेंट सोर्सेस. ओके, डिपेंडेंट सोर्सेज जो वेरिएबल पे डिपेंड करता है उसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं. ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेज विल डिपेंड्स अपॉन सर्टेन वेरिएबल, दैट वेरिएबल वी कॉल्ड एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. तो इसमें डिपेंडेंट सोर्स है ही नहीं अभी. असाइन पोलैरिटी अक्रॉस ईच रेजिस्टर एज पर द करंट डायरेक्शन. यस, सो एज पर दिस करंट डायरेक्शन, करंट ऐसा फ्लो रहा है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. सो ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, दिस इज प्लस रहेगा, दिस इज माइनस रहेगा. ओके, नाउ एज पर द करंट I2, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, ऐसा करंट फ्लो होगा. I3 के हिसाब से ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा. ये तो वोल्टेज सोर्स का पोलैरिटी दिया ही रहता है, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस. ओके, एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज अप्लाई KVL टू ईच लूप and get simultaneous KVL equation, isn't it? So now we'll apply KVL to loop first. So KVL to loop 1 is, KVL to loop first is, what is KVL to loop first is? Now ऐसा जा रहे हैं हम लोग, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं. नेगेटिव टू पॉजिटिव हम लोग प्लस कंसिडर करते हैं एंड देयरफॉर इट इज प्लस 100. सो सही है. ओके, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो माइनस कंसिडर करेंगे एंड इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना, तो I इंटू आर, दैट इज 15I1, 15I1. देन ये प्लस टू माइनस जा रहे हैं, मतलब माइनस कंसिडर करेंगे. ओके, एंड इट इज I इंटू आर, तो 20 इंटू I. अभी इसमें करंट कौन सा फ्लो रहा है, तो फर्स्ट लूप के लिए इट इज I1 माइनस I2. फॉर सेकेंड लूप इसमें का करंट क्या रहेगा, I2 माइनस I1. सो हम लोग फर्स्ट लूप को KVL लगा रहे हैं, तो इसमें का करंट क्या लेंगे हम लोग, I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 इक्वल टू 0. ओके, सो दिस विल गिव्स अस 100 इज इक्वल टू 15I1 प्लस 20I1 माइनस I2. Okay, so this 20I1 and 15I1 is 35I1 and minus 20I2 is equal to 100. This is first equation, isn't it? Then KVL to loop 2, second loop को KVL. Okay, so second loop को KVL कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अभी. तो माइनस 5I2, ओके, माइनस 30, इसमें का करंट क्या रहेगा, I2 माइनस I3 फॉर दिस लूप. सो I2 माइनस I3 एंड फॉर दिस लूप इट इज माइनस 20 I2 माइनस I1 इक्वल टू 0, isn't it? इक्वल टू 0. सो इसको KVL लगाते वक्त हम लोगों ने इसमें का करंट I2 माइनस I1 लिया, इसको KVL लगाते वक्त इसमें का करंट हम लोगों ने I1 माइनस I2 लिया. सिमिलरली
जब ये लूप को केवीएल लगा रहे सेकंड लूप को, तो इसमें का करंट I2 माइनस I3, क्योंकि सेकंड लूप को केवीएल लगा रहे तो वी आर अज्यूमिंग दैट I2 इज हायर देन I3, इसलिए I2 माइनस I3. थर्ड लूप को केवीएल लगा रहे तो वी अज्यूम दैट I3 इज हायर देन I2, एंड देन फिर हम लोग इसमें का करंट ले रहे I3 माइनस I2. Okay, like this. Now we'll simplify this equation. So minus 5I2 minus 30I2, okay, plus 30I3 minus 20I2 plus 20I1 equal to 0. So I1 terms will be 20I1. Okay, this is 20I1. I2 will be minus 30, 50, 55. Minus 55 I2 and plus 30 I3 equal to 0. This is second equation. Then we'll apply KVL to loop 3. KVL to loop 3. Okay, so we'll start from here. Minus 5 I3 minus 100 fall in potential. Okay, this is minus 30. Current flowing to this branch is I3 minus I2 equal to 0. So therefore this is equal to minus 5I3 minus 30I3 plus 30I2 equal to 100. Constant O side में ले लिया. Okay, and therefore this equation will be 30I2 minus 35I3 equal to 100. This is equation 3. Now using calc, solving this equation 1, 2 and 3, okay, we'll get the values of I1, I2 and I3. okay, ये तीनों equations है, हम लोग सॉल्व करते तो I1, I2, I3 मिलेगा. एंड देन करंट थ्रू 30 ओम क्या रहेगा, करंट थ्रू 30 ओम, ये रजिस्टर का करंट, आइदर यू से दैट I2 माइनस I3 और I3 माइनस I2, व्हाट मे बी. सो I2 माइनस I3 लेते हैं तो ये जो करंट है उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगा. I3 माइनस I2 लेते हैं तो डायरेक्शन अपवर्ड रहेगा. तो I2 माइनस I3 निकालने का, तो विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस करंट सोर्स, इजंट इट. So you have to solve these three equations. You will get the I1, I2 and I3. Okay. Thank you.